Hello, now let's solve the evaluation. Let's begin with section 1. Now, tick correct the useful effects and cross the harmful effects of friction. Now, we can walk easily on the road because of friction. तो उसे हम क्या करेंगे? हम उसे tick करेंगे. Then, fuel consumption of machine is more. That is wrong. We can write and draw comfortably. यूजफुल इफेक्ट है ना वो? यस, उसे टिक करना है. देन सोल्स ऑफ आवर शूज wear out and tear. क्रॉस vehicles can easily move on road. यस, यूजफुल इफेक्ट है ना? यस. तो देखो, फ्रिक्शन की वजह से हमारे यूजफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? वी कैन वॉक इजीली ऑन द रोड, वी कैन रीड एंड राइट comfortably, write and draw, and vehicles can easily move on the road, right? और उसके हार्मफुल इफेक्ट कौन से हैं? सोल्स ऑफ आवर शूज वियर एंड टियर, क्योंकि फ्रिक्शन है तो वियर एंड टियर हो ही जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था. उसके बाद फ्यूल कंजम्पशन भी मोर हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, राइट? सो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लो. ना अपन चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स. Dash prevents you from sleeping. Friction prevents you from sleeping. So write FRICTION. Friction. To stop your bicycle, you apply. क्या अप्लाई करते हो बाइसिकल को स्टॉप करने के लिए? You apply brakes. You apply brakes. Friction produces heat. Friction produces heat. HEAT, heat. Then friction causes wear and tear of moving parts of machinery. Harmful effect में से friction causes wear and tear of moving parts of machinery. Now next, if there is too much friction, nothing will move. If there is too much of friction, nothing will move. MOVE. हो गया? चले आगे. लिखा आपने अच्छे से आंसर्स? चलो अब ट्रू और फॉल्स करते हैं. फ्रिक्शन स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ट्रू. स्ट्रीमलाइनिंग हेल्प्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन. नहीं, वो रिड्यूस कर देता है ना. लुब्रिकेशन देखा था, स्ट्रीमलाइनिंग देखा था, राइट? तो वो फॉल्स है. फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. परफेक्ट. फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीज़ें साथ में होती है. Any substance which is used to reduce friction between two surfaces is called a lubricant. Any substance which is used to reduce friction between two surfaces is called a lubricant. Right? Oil है, powder है, right? जैसे कैरम बोर्ड का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो हम क्या डालते हैं? क्या डस्ट करते हैं? वी डस्ट पाउडर so that the coin moves easily, reducing its friction. So यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. Then you should wear shoes with smooth soles. नहीं तो क्या हो जाएंगे? घसर के गिर जाएंगे. तो लिखो false. लिखो F, false. अब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं. What is friction? What is friction? Now we have to write the answer. Friction is the force produced when one surface tries to slide over another surface. Friction is the force produced when one surface tries to slide over another surface. Friction is the force produced. क्या force है वो? When one surface tries to slide over another surface, right? ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नेम एनी टू लुब्रिकेंट्स. उसका आंसर आप क्या लिखोगे? पाउडर एंड ऑयल आर लुब्रिकेंट्स. पाउडर एंड ऑयल आर लुब्रिकेंट्स. नाउ नेक्स्ट, what will happen if you rub your hands together?
क्या हो जाएगा अगर हमने हाथ एक दूसरे पे घसे तो? इफ़ वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, लिखो, इफ़ वी रब आवर हैंड्स टुगेदर we will feel warm because friction produces heat. We will feel warm because friction produces heat. लिखा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. How does friction help you to write? How does friction help you to write? उसका आंसर लिखो. पेज नंबर 133 पर भी है. When we hold the pen or pencil, it is the friction between our fingertips and the pen that keeps them from sliding out of our hand. Again, it is the friction between the tip of the pen and pencil and the paper that enable us to write. When we hold the pen or pencil, it is the friction between our fingertips and the pen that keeps them from sliding out of our hand. नहीं तो घसर के गिर जाती थी. तो क्या रहता है हमारी फिंगर और पेंसिल, इसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है. तभी तो वो हाथ से सरकती नहीं है. Again, it is the friction between the tip of the pen or pencil. Again, it is the friction between the tip of the pen or pencil and the paper that enable us to write. Done? हो गया? लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन की तरफ चलें. चलो, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू शो हाउ फ्रिक्शन स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसका आंसर लिखेंगे हम. फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग एक्टिविटी. What we will need? We will need a football. Place a ball on the ground, give it a light kick. The ball will start to roll. After some distance, it will slow down and finally it will come to halt. The unseen force that made the ball stop is a frictional force. It makes every object moving on a surface reduce speed and finally come to a stop. ठीक है. Now next, what are the different ways to reduce friction? लिखो, by making the surface in contact as smooth as possible. By making the surface in contact as smooth as possible. More friction is produced in rough surface. And less friction is produced in smooth surface. ठीक है. Next लिखो, by adding lubricants such as powder, oil, grease. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, streamlining an object help to reduce friction and enables it to move faster in air or water. Streamlining an object helps to reduce friction and enables it to move faster in air or water. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर्स का ख़त्म हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू टू स्लो डाउन और स्टॉप योर बाइसिकल? What do you do? Now, right.
Friction helps in stopping a moving bicycle. Friction helps in stopping a moving bicycle. Full stop. When we apply brakes, they rub against the wheels. They rub against the wheels and slow down the cycle. And slow down the cycle. When we put your foot down to stop the bicycle, the friction between the foot and the ground makes the bicycle stop. When we put our foot down, the friction between the foot and the ground makes the bicycle stop. Makes the bicycle stop. Now next question is, how can friction be harmful? उसमें हमें disadvantages लिखने, छोटा सा ही आंसर है. Friction slows down moving object. Friction slows down moving objects. As it produces heat, there is wastage of energy in machine. As it produces heat, there is wastage of energy in machines. Friction increases fuel consumption of a machine. Friction increases fuel consumption of a machine. Force is required to overcome friction, and as a result, machine has to work harder. Force is required to overcome friction. Force is required to overcome friction, and as a result, the machine has to work harder. Then next, friction also causes wear and tear of moving parts of machinery. Friction also causes wear and tear of moving parts of machinery, door hinges and soles of shoes. Friction also causes wear and tear of moving parts of machinery, door hinges and soles of shoes. Then we are going to write the next question, useful effects of friction. Useful effects of friction. Friction helps you to get a grip on the ground. Friction helps you to get a grip on the ground. Friction helps vehicles move on road. Friction makes the brakes in vehicle work. Friction makes the brakes in vehicle work. It helps you to write and to draw. It helps you to write and to draw. Friction also produces heat. Friction also produces heat. Now we are going to move to challenging questions. Now, why should we be careful while walking on the floor which has been just been mopped? अभी पोछा लगा है तो हमें केयरफुल क्यों रहना पड़ता है, नहीं तो अब क्या हो जाते हैं, गीले की वजह से हम फिसल के गिर जाते हैं. A floor that just has been mopped is slippery. The slippery floor has a very smooth surface. The slippery floor has a very smooth surface. There is hardly any friction between the ground and the underside of our shoe or feet. So, we should walk carefully, otherwise we could slip and fall. क्या हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि वो स्मूथ बन गया. स्लिपरी बन गया मतलब स्मूथ, और जितना स्मूथ उतना फ्रिक्शन, जितना स्मूथ उतना फ्रिक्शन कम. So we should walk carefully, otherwise we could slip and fall. Now next, which of these three things will the boy be able to slide easily across the glass table? Eraser, coin or ice cube? बताओ. इरेजर, कॉइन और आइस क्यूब. सबसे स्मूथ कौन सा है, इरेजर, कॉइन की आइस क्यूब? आइस क्यूब है तो आइस क्यूब बहुत इजीली जाएंगी, राइट.
फ्रिक्शन कम है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है. नाउ सी द आंसर. द बॉय विल बी एबल टू स्लाइड द आइस क्यूब easily across the glass table. Ice and the glass table both have smooth surface. So there will be a very little friction and hence the two smooth surfaces ice cube will slide away very easily. तो children आपको क्या करना है? You have to write all these question answers into your classwork copy. Section 2 पूरा classwork copy में आपको क्या करना है? आपको लिखना है और अच्छे हैंड राइटिंग में with good presentation. ठीक है? Till then, bye bye.